A very good evening, everybody. So, welcome back once again to the channel Embrace IAS. आज we are going, today we are going to do the essay paper 2023 discussion that was done in the previous video in part 1. So, as I've told you what the model is, wait for a second. Wait for a second, guys. Yes, the model is that there are two sections in the paper I've discussed previously, section A and a section B. ठीक है, section A होते हैं आपके philosophical topics and section B होते हैं आपके contemporary topics which since 2019 have been given a philosophical tint. ठीक है, so in these two sections, I will not be providing you any kind of a prepared template for essay. ठीक है, क्योंकि essay writing जो होती है वो एक फ्री राइटिंग होती है, फ्री हैंड क्रिएटिव राइटिंग होती है. आप अगर किसी टेम्पलेट के अकॉर्डिंग चलोगे तो वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच डज नॉट गो विद द essay पेपर एटलीस्ट. ठीक है, जीएस के साथ वन साइड फिट्स ऑल अप्रोच चली जाती है, ऑप्शनल के साथ चली जाती है, ऐसे और एथिक्स के पेपर के साथ नहीं जाती. तो यू नीड टू डू ब्रेनस्टॉर्मिंग. In the previous session, I have taught you how you have to brainstorm for an essay. Okay. So section A का एक topic हमने पिछली बार लिया था. The topic was, wait for a second. Yes. The topic was this: thinking is like a game. It does not belong. Yes. Thinking is like a game. It does not begin unless there is an opposite thing. ठीक है, ये टॉपिक हमने पिछली बार डिस्कस किया था. And I have invited answer submissions on this topic as well as on all other 4 topics of this paper. I have told you I will be discussing only one topic, only the first topic of each of the papers, like each of the sections. And the other answers you will be brainstorming and you will be submitting it on the Telegram channel. We'll be evaluating it. And after evaluation, I will be providing you what new ideas could be incorporated. Right? तो आज हम section B का एक topic करेंगे. The basic aim here is to teach you how to brainstorm for an essay. Template बताने का कोई मतलब नहीं है. Plenty of people are doing this. There are already plenty of templates on the YouTube. You can go and watch them out. लेकिन टेम्पलेट्स हेल्प नहीं करती. रट्टा नहीं मार सकते हो आप ना एसे के पेपर में ना एथिक्स के पेपर में. राइट. सो यू नीड टू वर्क ऑन न्यू एंड न्यू आइडियाज, क्योंकि जितना ही वो क्रिएटिव होगा, जितना ही आपका ऐसे यूनिक होगा, उतना ही इट विल फेच यू मार्क्स. ठीक है, सो वर्क ऑन दोस थिंग्स. आज का हमारा टॉपिक है टॉपिक 1 ऑफ सेक्शन बी. गर्ल्स आर वेड डाउन बाय रिस्ट्रिक्शंस, boys with demands, two equally harmful disciplines. Right? This is our today's topic. So let us begin. Topic है हमारा girls are weighed down by restrictions and boys by demands. Two equally harmful disciplines. ठीक है, so this is our topic.
व्हाट आई हैव टॉट यू इज, इंट्रोडक्शन को स्टार्ट करने के दो तरीके होते हैं, बेसिकली तीन होते हैं. आई कंसिडर टू ओनली. व्हाई? बिकॉज if you have a good creative writing skill, go for anecdotes. Like वरना anecdotes will make your answer horrible. ठीक है, तो वहां तक मत जाओ अगर आपके पास अच्छी क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स नहीं है, राइट? क्योंकि एनेक्डोट से पहली चीज होती है, आई टोल्ड यू लास्ट टाइम ऑल्सो, कि आपको कनेक्टिविटी बनानी होती है. किसी भी रेडीमेड टेम्पलेट एनेक्डोट से आप कनेक्टिविटी नहीं बना पाओगे. यू नीड टू मेक एन एनेक्डोट कंप्लीटली सूटिंग योर सिचुएशन. वो आपको वही बनाना पड़ता है. इफ यू हैव दैट अमाउंट ऑफ क्रिएटिविटी, गो फॉर एनेक्डोट्स, अदरवाइज दे आर गोइंग टू स्पॉइल योर एंटायर एसे, राइट? So anecdotes I will not prefer until and unless you have a good creative writing skill. दूसरा जो तरीका होता है, you can begin with a quote, you can begin with a personality who has said a similar thing that matches your topic. A third and the easiest way is beginning with the keywords. Keywords उठाओ and try to explain those keywords. ठीक है? So in this essay we'll be talking about these two ways. I'll be doing it by both the ways for you. ठीक है? कौन से दो तरीकों से बनाएंगे हम इंट्रोडक्शन? एक हम बनाएंगे कीवर्ड के तरीके से और एक हम बनाएंगे हमारे फेमस थिंकर के पर्सपेक्टिव से. ठीक है, एक हम देखेंगे कीवर्ड से और एक हम देखेंगे कोड से. हम बिगिन करते हैं. तो कीवर्ड्स हमारे क्या हैं? गर्ल्स, रिस्ट्रिक्शंस, बॉयज, डिमांड्स, वेट डाउन एंड हार्मफुल. ठीक है, ये हैं हमारे कीवर्ड्स इस पूरे टॉपिक के. गर्ल्स, restrictions, boys, demands, weighed down and harmful. The girls are weighed down by restrictions, boys are weighed down by demands, and both of these are very harmful disciplines. ठीक है, ये हो गया हमारा कीवर्ड वाला पार्ट. अब अगर हमें इंट्रो कीवर्ड से बनाना है, तो लेट अस सी हाउ वी आर गोइंग टू डू दिस. We'll start with explaining the modern day societies. Modern day societies and civilizational developments. And civilizational developments which promote materialism. Which promote materialism. हम किस पर आएंगे? materialism पर आएंगे, क्योंकि materialism का ही रिजल्ट होता है कंपटीशन, materialism का ही रिजल्ट होता है ईगो, materialism का ही रिजल्ट होता है जेलसी, materialism का ही रिजल्ट होता है ड्राइविंग आउट द सेकंड पर्सन. ठीक है, तो मॉडर्न डे सोसाइटीज का हम लिंकेज दिखाएंगे. सिविलाइजेशनल डेवलपमेंट हैज लेड टू डेवलपमेंट ऑफ मटीरियलिज्म. मटीरियलिज्म हैड रिजल्टेड इनटू इंडिविजुअलिस्टिक टेंडेंसीज. मटीरियलिज्म किसमें रिजल्ट किया है? इंडिविजुअलिस्टिक टेंडेंसीज. जब हम इंडिविजुअलिस्टिक टेंडेंसीज पे बताते हैं, तो इंडिविजुअलिस्टिक टेंडेंसीज पे क्या होता है? ईच मैन, when we use the term man in a normal perspective, we are using it in a gender neutral term. ठीक है, मैन का मतलब सिर्फ मेल काउंटर पार्ट से ही नहीं होता है. जब भी कोई किसी कोर्ट में या किसी रेफरेंस में हम मैन का यूज करते हैं, तो वो एक जेंडर न्यूट्रल टर्म हो जाता है, इंक्लूडिंग बोथ मेन एंड वुमेन. ठीक है, सो ईच मैन is basically concerned with what is himself. ठीक है, he is concerned with only himself or herself. Himself or herself. They are not concerned with the second person. Even if it is about your interpersonal relationships, they are not concerned about the second person. They are basically concerned about themselves alone. ठीक है, so this is a result of materialism. Materialism is a result of civilizational development, and materialism has promoted actually the individualism and utilitarianism.
Utilitarianism means today man has become a market commodity. Man has become a market commodity. Why? His value is decided by his usefulness. Value of man is assigned based on what kind of job profile he has, based on what kind of family background he has. A value of man is assigned, and this value is a monetary value that has been assigned. You can give over here an example of the dowry practice, right? डाउरी प्रैक्टिसेस का डिमांड लाइक एग्जांपल आप कैसे दे सकते हो? A boy is rated at certain amount. They are actually selling off their boy in marriages at a certain amount, and what decides this amount is a government job, is the business setup of the person or the man. ठीक है, उसकी कितनी नेटवर्थ है, इस पे बेस्ड डाउरी डिमांड की जाती है. So they are actually selling their boy as a market commodity, right? You can give this example. तो यहां से आप उस कीवर्ड से गर्ल्स और बॉयज, गर्ल्स वेटेड डाउन बाय restrictions, boys weighted down by demands. बॉयज का आपने एग्जांपल दे दिया, गर्ल्स का restrictions का एग्जांपल आप दे सकते हो कि because of this materialism and individualism pertaining in the society, what has become is man has become self-centered. And as we all know, the common dictum goes, man is but a social animal. Man is but a social animal. Social animal means he is in a web of relationships. And the moment he becomes individualistic, what goes away is the social relations. ठीक है, उसका सोशल एस्पेक्ट चला जाता है जैसे ही वो इंडिविजुअलिस्टिक बन जाता है. And as soon as the social aspect is taken away from a man, what he remains only is an animal. And so to prevent from these animals, what is going on, girls, is the restrictions. In name of these animals, the girls are bound in restrictions. ठीक है, तो ऐसे आपने डिराइव किए अपने कीवर्ड्स. तो अगर आप कीवर्ड्स के एसेंस से जाओगे तो व्हाट आर यू गोइंग टू राइट डाउन इज, एक बार समराइज कर देते हैं. यहाँ तो वैसे भी दिस इज नॉट एन एसे व्हिच यू कैन स्टार्ट विद एन एनेक्डोट. इट्स नॉट एट ऑल एप्रोप्रिएट टू स्टार्ट इट विद एन. ठीक है, अगर हम कीवर्ड से फ्रेम करेंगे तो हमारे कीवर्ड्स क्या थे? गर्ल्स. गर्ल्स किसके अंडर में आती है? रिस्ट्रिक्शंस. बॉयज, बॉयज आते हैं डिमांड्स में. बोथ आर वेट डाउन बाय इट, and this is equally harmful, right? तो हम कैसे स्टार्ट करेंगे? We will start with evolution of civilized societies. Evolution of civilized societies. This evolution of civilized societies has led to the practice of materialism. Materialism has promoted individualism and utilitarianism. Individualism has resulted in making man a self-centered person. Man is becoming a self-centered person. Social aspect neglected from social animal. Neglected from social animal. And since the social aspect is neglected, what is man left is an animal. So this results in basically the restrictions on girls. ठीक है,
Utilitarianism will also result in restriction on girls. Why? Because girls are considered as a product of enjoyment. That is the reason why restrictions are imposed on girls in the name of the wild animal that is roaming about in the society. ठीक है? So this is all about ये वाला आपका keyword girls and restrictions. दूसरा आते हैं boys and demands पे. Utilitarianism society, man is made a commodity of exchange. Man is turned into a commodity of exchange. And what this commodity of exchange results into? This results into putting a monetary value on a person. Okay? Here you will give an example of dowry. Understood? This is how you have to continue with your keywords related introduction. ठीक है? अब हम एक दूसरे तरीके की भी बात कर लेते हैं पैरेलल में. Sorry. Extremely sorry. Okay. So now we're talking about a separate method. क्या है ये method? Wait for a second. Yes. दूसरा method है हमारा by means of a quote. Okay. First, let me move the board a little bit. The second way we could do it is the way of sorry, a quote. ठीक है? देखो कोट का रेफरेंस कब आता है? जब आपको उस स्टेटमेंट को देखकर इमीडिएटली कोई कोट स्ट्राइक कर दे. You will not have time to sit and think a quote for that topic. इसीलिए what I suggest is the best way is deriving your intro from your keywords. ठीक है? क्योंकि वहां आपको सोचने का टाइम नहीं मिलेगा. लेकिन देर आर सर्टेन टॉपिक्स कि जहां आपको इमीडिएटली एक बहुत ही फेमस कोट रिमाइंड कर जाती है. यू कैन स्टार्ट विद दैट. ठीक है? तो जब हम ये वाला टॉपिक देखते हैं, ये टॉपिक है अबाउट वेइंग डाउन अ ह्यूमन बीइंग. ठीक? दिस टॉपिक इज अबाउट वेइंग डाउन अ ह्यूमन बीइंग, राइट? बी इट अ मैन और बीइंग इट अ वुमन. So all of us have studied whenever or wherever we have studied ethics or society, we have studied a person named as Rousseau, especially history related and political science related optionals related students have heard these names very often. Rousseau. So Rousseau has given a book named as Social Contract. And the opening lines of this book says, a man is born free. A man is born free, but is bound in chains everywhere. But is bound in chains everywhere. Right? So this is a quote which is directly correlated with the topic. Moreover, अगर आपने previous years essays देखे होंगे तो UPSC has repeatedly given essays on this very topic. एक बार तो इस direct quote पर ही essay दिया हुआ है UPSC ने. I don't remember the year right now, but it has been a direct previous year statement. Okay, so if you have gone through the previous year papers of essay, you might be knowing it very well that UPSC has asked multiple times essays on this very topic. कभी डायरेक्ट कोर्ट से भी पूछा है उन्होंने और कभी घुमा फिरा के भी इसी कोर्ट के कंक्लूजन पर आए हैं. दिस ईयर ऑल्सो ये वाला जो टॉपिक है, दिस इज एंटायरली बेस्ड ऑन दिस वेरी कोट. अ मैन इज फ्री, ही इज अ फ्री सोल. क्योंकि जब वो पैदा होता है तो ना तो वो अमीर होता है ना वो गरीब होता है. Neither he is rich nor he is poor. ना तो वो मालिक होता है ना तो वो सर्वेंट होता है. ना तो वो सर्वेंट होता है ना तो वो बॉस होता है. जब वो पैदा होता है ना तो वो मैन होता है ना ही वो विमेन होता है, ना ही वो बॉय होता है ना ही वो गर्ल होता है. He is an independent soul. He is just a human being.
what makes him into several categories is the chains of the society. And these chains are basically invisible. Invisible but binding a man throughout his life. वो पैदा इंडिपेंडेंट सोल की तरह होता है, लेकिन थ्रू आउट हिज लाइफ ही इज नेवर अलाउड टू लिव एज एन इंडिपेंडेंट सोल. ओके, यही से आप डिराइव करोगे गर्ल्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, बॉयज के ऊपर डिमांड्स होती है. दोनों ही किसी ना किसी बर्डन के अंडर होते हैं, किसी ना किसी चेन से बाउंड होते हैं. एंड दीज चेन्स आर बेसिकली द इनविजिबल चेन्स फॉर्म्ड बाय द सोसाइटी. अगेन यू विल रिटर्न टू दिस वेरी इंट्रोडक्शन ओनली. दोनों तरीके से आप स्टार्ट कर रहे हो, लेकिन इंट्रोडक्शन की मीनिंग यही रहेगी. अब जब आप सोसाइटी को भी एक्सप्लेन करोगे कि ये चेंज डेराइव कहाँ से होती हैं बेसिकली, तो आप फिर से वही आओगे. सिविलाइजेशनल सोसाइटीज बसी, मटीरियलिज्म आया, उसने इंडिविजुअलिज्म प्रमोट किया और यूटिलिटेरियनिज्म प्रमोट किया. अगेन यू विल डेराइव द सेम थिंग. ठीक है, तो चाहे इस तरीके से करो चाहे इस तरीके से करो, दोनों से एसेंस सेम ही निकल रहा है. तो दिस इज हाउ यू कैन डू द इंट्रो ऑफ दिस एसे, राइट. अब आ जाते हैं हम बॉडी पोर्शन. बॉडी पोर्शन में दिस इज, आई गेस दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट टॉपिक्स टू कंटिन्यू विद द बॉडी पोर्शन. एंड बी कॉशियस, व्हेन आई से इट इज वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट टॉपिक्स, इट मीन्स कि इट इज द टॉपिक इन विच यू रिक्वायर सम एग्जेम्पलरी स्किल्स. क्योंकि ये इजीएस्ट टॉपिक्स है, इजीएस्ट टॉपिक है, तो सभी लिख रहे होंगे. सभी लिख रहे होंगे तो टू फेच गुड मार्क्स यू नीड टू डू समथिंग यूनिक, right? That is why I told you how to start with a keyword as well as with a quote. This was the reason that I gave you both the ways of starting this essay. जब भी आप देखना कोई इजी टॉपिक है जो आपको देखने में लगे अरे ये तो बहुत इजी है, इसके तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं हमारे पास, तो रिमेंबर ईच एंड एवरी पर्सन हु इज स्टडीइंग और हु इज प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जाम, ही विल हैव दोस पॉइंट्स, क्योंकि ये पॉइंट्स आपके जीएस से डिराइव हो रहे हैं. आपको उन पॉइंट्स को और बेटर तरीके से प्रेजेंट करना है सो दैट यू कैन गेट गुड मार्क्स, राइट. दैट इज आवर मोटिव. प्रेजेंटेशन एनहांस करना पड़ेगा. अगर टॉपिक इजी है तो प्रेजेंटेशन बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि टॉपिक इजी है, हर बच्चा वही लिख रहा होगा, राइट. अब आ जाते हैं हम बॉडी पार्ट. तो बॉडी पार्ट में हमें क्या पॉइंट्स निकालने हैं. सबसे पहले हमने इनिशियली एक्सप्लेन कर दिया कि ये कहाँ से डिराइव हो रहे हैं, बेसिकली ये बाउंडेशंस कहाँ से डिराइव हो रही हैं, ये चेन्स कहाँ से आ रही हैं. ओके, नाउ वंस वी एक्सप्लेन द ओरिजिन ऑफ दोस चेन्स, नाउ वी हैव टू एक्सप्लेन व्हाट आर दोस चेन्स, राइट. तो उन चेन्स की जब हम बात करेंगे, फिर हम उन चेन्स को फर्दर डिवाइड कर देंगे इनटू गर्ल्स एंड इनटू बॉयज. कैसे बॉयज बर्डनसम किए जाते हैं और कैसे गर्ल्स बर्डनसम किए जाते हैं. सब्ज्यूगेशन इज अ टर्म विच इज जेंडर न्यूट्रल. दोनों ही सब्ज्यूगेटेड है सोसाइटी में. सब्ज्यूगेशन इज जेंडर न्यूट्रल. इसीलिए तो कहा जाता है कि विमेन एम्पावरमेंट डज नॉट मीन दैट यू आर डूइंग मेन डिसएम्पावरमेंट, बिकॉज सब्ज्यूगेशन इज अ टर्म दैट इज जेंडर न्यूट्रल. ये दोनों के लिए होता है. गर्ल्स को सब्जुगेट किया जाता है बाय रिस्ट्रिक्शंस. क्या रिस्ट्रिक्शंस होते हैं? लेट नाइट बाहर नहीं जाना है, मैरिज के बाद जॉब नहीं कंटिन्यू करनी है, देन योर ड्यूटीज आर रिस्ट्रिक्टेड टू होम, यू आर अ होमली पर्सन. even if a girl who is managing the house both by her interior duties like domestic duties as well as her office duties, and she is very well managing it, she is not respected for it. Okay, so there are several restrictions on girls. You can mention each and every restriction. I think this is one of the topic in which you will be writing a number of restrictions. ठीक है, क्योंकि this topic is which will touch many hearts, so they will write number of restrictions, right? Especially the girls. ठीक है, restrictions क्या है ये लिखने के लिए I don't need to explain. I think you will mention what are the restrictions on girls. Coming on to how the demands are posed upon boys. See, one keyword I can tell you
गर्ल्स के केस में आप लिख सकते हो, गर्ल्स आर endowed with a cult of domesticity, with a cult of domesticity. Even if she is doing exemplary performance in the outer world, she is not considered for that performance. Despite being not respected for it, she is even not considered for that performance, right? So that is a problem. Cult of domesticity उसके साथ associate कर दी जाती है कि वो जो perfect है वो सिर्फ घर के कामों में ही perfect है, right? So that is one problem. दूसरी तरफ आते हैं boys. Boys से associate कर दी जाती है cult of brevity. Cult of brevity. अब ब्रेविटी का जो कल्ट है, मतलब ब्रेव होने का, करेजियस होने का जो कल्ट है, दिस इज बीइंग एसोसिएटेड विद द बॉयज. नाउ व्हाट हैपेंस विद दिस इज, in the name of their courageousness, they are actually being exploited. They are actually being subjugated. Why? Because they are courageous, they cannot cry at moments. They are courageous, they cannot express their feelings. They are courageous, they have to go out and they have to face each and every hurdle in the society, and despite all these hurdles that they are facing, they have to return home smiling and with their incomes. Okay, so this is a problem. ये एक कल्ट एसोसिएट कर दिया जा रहा है हर जेंडर के साथ. Cult of brevity, cult of domesticity. You can begin your body part with this. ठीक है, चेन्स क्या है? ये जो एसोसिएटेड कल्ट्स हैं. एक माइंड मैप बना हुआ है, एक माइंड सेट बना हुआ है कि गर्ल्स आर एसोसिएटेड विद डोमेस्टिसिटी, बॉयज आर एसोसिएटेड विद ब्रेविटी. Why? Boys don't have a four-chambered heart, or boys don't have a soul. It is not so. Biologically, both are made the same. The cardinal organs are both same in boys and girls. Then why aren't they expected to show their emotions? So this is how demands are posed upon them. Not only the financial demands, but the physical demands, the family demands, the societal demands, all are posed upon the boys. A boy who crosses age of 21 or say 25 at the maximum, societal pressures of getting settled gets upon this person. Why is it so? Why is he demanded to earn at the age of 25 and run a family? Maybe he has dreams beyond this. Maybe if he is given a time to settle at an age of 35 or 40, he will be doing much better for his family. But no, he is burdened by these demands. Right? So this is what you have to show in this first paragraph of your body. First and second paragraphs will go in this. फर्स्ट पैराग्राफ में आप गर्ल्स का एक्सप्लेन कर सकते हो, सेकंड पैराग्राफ में यू कैन डू इट फॉर बॉयज. आई विल रिकमेंड ट्राई टू यूज सच काइंड ऑफ वर्ड्स लाइक कल्ट ऑफ डोमेस्टिसिटी, कल्ट ऑफ ब्रेविटी. राइट, 2 पैराग्राफ्स आपके हो गए. तीसरे पैराग्राफ में आप क्या लिखोगे? व्हाट आर दी नेगेटिव्स ऑफ दीज रिस्ट्रिक्शंस. रिस्ट्रिक्शंस के नेगेटिव्स क्या होते हैं? जब आप नेगेटिव्स की बात करोगे या जब आप पॉजिटिव्स की बात करोगे, ट्राई टू बी जेंडर न्यूट्रल. ये नहीं करना कि गर्ल्स के लिए ये नेगेटिव होता है, बॉयज के लिए ये नेगेटिव होता है. ट्राई टू बी जेंडर न्यूट्रल. हर ह्यूमन बीइंग पे रिस्ट्रिक्शन का मतलब क्या होता है? व्हेनेवर अ पर्सन इज बर्डन, उसका मतलब क्या होता है? सबसे पहला होता है मेंटल हेल्थ इज अफेक्टेड. पर्सन डेवलप्स इश्यूज लाइक स्ट्रेस एंड एंजाइटी. ये तो हो गए जो फिजिकल प्रॉब्लम्स होते हैं या फिजिकल नेगेटिव पार्ट्स होते हैं ऑफ रिस्ट्रिक्शंस. दूसरी चीज होती है, रिस्ट्रिक्शंस क्या कर देते हैं? दे लिमिट अ पर्सनालिटी, लिमिट द ग्रोथ ऑफ पर्सनालिटी.
The best part of the personality is not able to come out. Why? Because there are certain restrictions. There are certain limits to that person. As I have told you, a boy being in age group of 21 to 25 is subjugated with pressures of being settled in life and pressures of running a family. These pressures restrict him to go beyond his dimensions. These pressures restrict him to think beyond this life, think beyond 9 to 5. He cannot think. Why? Because he is into a demand of settling and running a family. ठीक है, तो it limits the growth of your personality beyond a certain strata set up by the society, right? Let's talk about girls. Girls are from very beginning, they are taught to be like associated to be domestic, to be domesticized. Okay, so they are domesticized from their very beginning. They're taught things in the perspective of being a domestic woman. See, it is not so कि domesticize करना गलत, domesticize करना गलत नहीं है. You need to do it because ultimately societal arrangement ऐसा है कि girls have to run a family and they are an important pillar of the family. ठीक है, अगर ये उस चीजों को नहीं संभालेंगी, उन डोमेस्टिक कोर्स को नहीं संभालेंगी या डोमेस्टिक ड्यूटीज को नहीं संभालेंगी, तो इवन बॉय इज गेटिंग गोइंग टू गेट इनटू अ मोर burden of demands, right? Because then there will be demands from this girl also towards the boy for doing the even domestic duties. ठीक, तो ऐसा नहीं है that domesticizing a girl is wrong, but associating a domestic cult to a girl is wrong. If a girl is overburdened with domestic duties, she will even decline in her abilities to do those domestic duties. वो ड्यूटीज उसके लिए मोनोटोनस हो जाएंगी. उसको अगर फर्दर कुछ एक्सप्लोर करने देना है, उसको अगर न्यू आइडियाज इन्वेंट करने देने हैं, इवन इन द डोमेस्टिक स्फीयर, even then she needs to be mentally free. She needs to do work out of her joy and ecstasy. She does not need to do work out of any kind of obligation upon her, right? There have been numerous examples of girls who have seen both the domestic sphere as well as the work sphere, and they have managed it well. Okay, so you can explain it. What are the negatives of restriction? They basically limit the growth of your personality and they can cause the mental health issues. Apart from this, you can write there is loss of creativity, there is loss of adventure and exploration in life. The true self is never brought out because a person does not get time to analyze himself. A person does not get time to sit with himself and know about his own self. So even the what you call a kind of intellectual development of the person becomes hampered. ठीक है? So this is the negative side. ये हो गया आपका थर्ड एंड फोर्थ पैराग्राफ. अब देख लेते हैं पॉजिटिव साइड ऑफ रिस्ट्रिक्शंस. ऐसा नहीं है कि बर्डनिंग इज ऑलवेज रॉन्ग. बर्डनिंग इज करेक्ट. यू कैन नॉट गो ऑन सेइंग कि नहीं बर्डन नहीं डालना चाहिए, बर्डन नहीं डालना चाहिए. क्यों नहीं डालना चाहिए? Every one of you might be knowing this word stress. What is it associated with? It is associated with fear. So fear in a small quantity is actually a medicine. Fear in a small quantity is actually a medicine. Or what you can call it in terms of chemistry is a catalyst. How? See, with a very simple example, you are an extreme lazy person.
and while moving on the road, you stepped on the tail of a dog. And now that dog is behind you to bite. You are a person who will not run in any circumstances. But at that point of time, you will be the person who will be running even at the speed of 30 kilometers per hour. You will be running. And like, not a matter of astonishment, you will be climbing a long wall also to prevent yourself from a dog. Right? So what does fear initiate in you is a spirit of doing things. A spirit of doing, a spirit of duty is induced by fear. जब आप डरोगे तभी आप उसी चीज के लिए काम करोगे. So what do these burdens and these restrictions do for you is they create a fear in you. They impose an obligation on you कि आपको भागना ही है. Why? Because a dog is behind you to bark you. Sorry, to bite you. If you won't run, the dog will bite you. And biting of the dog will cost you more than doing that duty. भागने से आपको उतना नुकसान नहीं होगा जितना कि उस डॉग के काटने से हो जाएगा. So this kind of things actually induce an obligation upon you to do that duty. Boys के ऊपर अगर demands का pressure ना हो, they will actually become animals. They won't remain social anymore. अगर ये social obligations नहीं है, they will actually become animals. They will just eat, sleep, and the like regular duties that the animals do. Basically, the diversification in life comes from the pressures on you. जितना आपके ऊपर प्रेशर होता है परफॉर्म करने का, उतना ही अगर आप उस प्रेशर को इजीली हैंडल कर ले रहे हो, इफेक्टिवली हैंडल कर ले रहे हो, आप उतना ही अच्छा परफॉर्म करते हो. राइट? सो दिस इज वन ऑफ द बेनिफिट ऑफ रिस्ट्रिक्शन. टेकिंग इट फॉर गर्ल्स, गर्ल्स के ऊपर अगर रिस्ट्रिक्शंस ना हो, we are seeing examples in the society even today. I will not name any kind of example, and you also won't be naming any kind of example. You can just write that how, in the name of freedom, girls are actually demanding the right to do whatever they want. Right to do whatever they want. So to prevent this, certain amount of restrictions are definitely required. They are required. Why? Because we have seen materialism ने क्या किया है, utilitarianism promote किया है, individualism promote किया है, man को social animal से animal बना दिया है, animalistic tendencies develop हो गई, women as a product देखी जाने लगी है. तो लेट नाइट पे विमेन को बाहर जाने से रोकना, या एक मेल काउंटर पार्ट के फॉलो में विमेन का बाहर जाना, क्योंकि मेल को विमेन को एज अ प्रोडक्ट देखा जाने लगा, एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ जॉय, एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ यूज देखा जाने लगा. तो ऐसे में अब मेल काउंटर पार्ट इज रिक्वायर्ड विद अ वुमेन टू काउंटर द अनदर मेल, बिकॉज वी कैन नॉट डिनाई दैट even till date it's a male dominated society. So you need a male counterpart to counter the another male. तो उन जगहों पे आपके ऊपर एक certain amount of restrictions are important. But again that point you will be writing restrictions के हमने positives लिखे, फिर उसके बाद हम ये लिखेंगे definitely required है, but it is a medicine. It is basically a kind of drug. ड्रग ओवरडोज से क्या हो जाता है, ड्रग ओवरडोज से अ पर्सन डाइज. तो रिस्ट्रिक्शंस आर बेसिकली अ काइंड ऑफ ड्रग. अ ड्रग ओवरडोज will lead to death of that person.
Death means will bring stagnancy in the life of that person, and stagnancy is death. But a correct dosage of that drug will actually cure the person, will actually make his life very beautiful. So this is what you can mention in your paragraph 5. ठीक है, हो गए हमारे सारे 5 paragraphs. Now moving on to the conclusion. Ab conclusion mein what I have told you is you have to summarize the entire idea that you have discussed in the essay. क्या discuss किया है आपने? Undoubtedly there are restrictions. Okay, because the society has developed into a civilizational societies. There are certain requirements of the societies because of which there are restrictions upon girls and there are restrictions upon boys. But each individual is basically a free soul. Each individual is a free soul. No restriction can stop a soul's intellectual development. No restriction can stop a soul's moral development. But restriction is like a drug, is like a pill, the overdose of which will lead to stagnancy in life, but the correct dosage of which will make the life more beautiful and live a more longer than a normal life. So this is how you are going to conclude your essay. So we have seen how we will be writing the introduction, the body and the conclusion part. Okay. So here we are ending this video. Again, I have said in the previous video also, and I am saying in this video also, all of your answers are invited. You can submit your answers in the Telegram group. We will be evaluating it. And any doubt related to essay writing, you can post a question on the group. I will definitely be answering it. Here in the comment section also, you can write if you want further explanation on any topic of this paper, which you feel like should be explained. I will be taking up that topic if you write in the comment section of the video, right? Otherwise, this was the way how I was going to do it. Section A का एक topic हमने कर लिया था, section B का भी एक topic हमने कर लिया. Rest of the topics are up to you because I don't favor providing a template for each of the essay. You can't mugify all those 200 or 250 templates and go into the exam and vomit it out. Okay, that is not going to give you results. So I will not do that template work. I am trying to teach you how to brainstorm for an essay with the limited amount of knowledge that you have. All these points which I told in this essay, is anything out of a rocket science or is anything out of a non-fiction that you need to read mandatorily? No. All of these things are from GS. So if you are very thorough with your GS, you can easily write an answer. Easily write an essay. What it takes is basically the presentation of your essay, right? So see you in the next video. Goodbye for today.